We look into parts of a graph and we want to develop a control flow graph from our code. A control flow graph is a static abstract representation of the program. Static. It is static analysis because we are not executing the program itself. Abstract representation of the program. Now CFG, control flow graph, is a graph, and graph is basically set of nodes and set of edges. And set of nodes is either a statement node or a predicate node. Statement node, where we are assigning, we are making computational use of our variables and we are making assignments. And predicate node, where we are testing, we have conditional statements or we are entering into loops. Statement node represents a simple statement or a composite statement, or it represents, as we say, statement node can be used to represent a basic block. What is a basic block? A basic block, आप imagine करें, एक मैं छोटी सी मेरे पास एक नोड है जो स्टेटमेंट है, फिर एक और स्टेटमेंट है, फिर एक और स्टेटमेंट है, देन देयर इज एन इफ स्टेटमेंट. देखिए यहाँ पे मेरे पास मेरा कंट्रोल डाइवर्ज करेगा, या ये ट्रू में जाएगा या ये फॉल्स में जाएगा. लेकिन ये तीन सीक्वेंशियल है और इन तीन में कंट्रोल फ्लो हैज टू फॉलो अ सीक्वेंशियल पाथ. I can represent all these three by one. So this is what we say. A predicate node represents a conditional statement. Each edge in the set E represents flow of control from one statement to the other statement. We use circles. There are several conventions to develop control flow graph. We will follow the flow graph convention. We use circles to represent statements and rectangles to represent predicate nodes. There are other conventions where you use diamond to represent the predicate node. This is one example. Here, if you see, this is a node, this is an edge, and here I wanted to represent, by this I wanted to represent that there are maybe several statements and we have clubbed them or bunched them into one. Now nodes, statements represented by circle. In our, there is a convention which takes a rectangle for this. Condition, we are using a rectangle. There are conventions where we use a diamond shape like this. However, edge remains the same. It is represented by a line. Convention, all edges. How this is very important. ये बड़ा important है कि अगर आप let's say ये use करें या ये use करें, अगर आपने true एक साइड पे लेकर आए हैं और false आपका दूसरी साइड पे जा रहा है, तो this is pretty important कि अगर आपके ट्रू एक साइड पे आ रहे हैं तो फिर सारे ट्रू आपके एक ही साइड पे आने चाहिए. और अगर आपके फॉल्स, तो ये नहीं होना चाहिए कभी यहाँ पे ट्रू आ गया, कभी इधर इस फॉल्स वाली आपने जो ऑप्शन इधर ले ली, विच इज़ काइंड ऑफ अ कन्वेंशन एज वेल. अच्छा जनाब, दिस इज व्हाट इज रिटन कन्वेंशन. ऑल एजेस रिप्रेजेंट टी और टू बी ऑन द सेम साइड थ्रू आउट द ग्राफ. दैट इज इफ ऑन लेफ्ट ऑफ इन वन इफ स्टेटमेंट, देन ऑन लेफ्ट ऑन ऑल इफ स्टेटमेंट्स. तो ये कन्वेंशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको फॉलो किया जाए, लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है.